आवाज आ रही है? यस सर। श्रुति आवाज आ रही है? यस सर। टुडे वी विल डिस्कस laws of returns. ओके सर। Laws of returns oblique law of variable proportion. ओके सर।
पढ़ो तो श्रुति। Laws of return. There are 5 factors of production such as land, labor, capital, organization, and enterprise. But we use only 2 factors, labor and capital, in the law of returns. There are 3 laws of returns under classical approach. First, law of increasing return. Second, law of constant return. And third, law of diminishing return. पूनम तुम पढ़ो। Yes, sir. Law of return. There are 5 factors of production, such as land, labor, capital, organization, and enterprises. But we use only 2 factors, labor and capital, in the law of returns. There are 3 laws of returns under classical approach. First, law of increasing return. Second, law of constant return, and law of diminishing return.
पढ़ो तो श्रुति। Under law of returns, capital is fixed but labor is variable. Q is function of L and K bar. Q is function of labor and capital. L is variable but K is constant. K bar we will read K bar. Q is output or production, but L is labor and K bar is fixed capital. पूनम, Yes, sir. Under law of return, capital is fixed, but labor is variable. Q is a function of L and K bar. Q is a function of labor and capital. L is variable, but K is constant. K bar, we will read K bar. Q is a output or production, but L is a labor and K bar is fixed capital.
In first case, labor is increased by 10%, but output increases by more than 10%. In second case, labor is increased by 10%, production also increases by 10%. In this case, labor increased by 10%, but production increases by less than 10%. Increase in all three cases. But here, more than the labor, output increases. Here, output increases just as labor, or output increases less. Increases. Output always increases, but less than the increase in the labor. So under law of increasing return, labor increased 10%, production increases more than 10%. Labor is increased 10%. Output increases by More than 10%. more than 10%. This is called law of increasing returns. Number two, labor is increased 10%. Output increases by just 10%. This is called law of constant return. Labor is increased 10%, but output increases. Output increases by less than 10%. This is called law of diminishing returns. Every time production increases, but more than labor, just equal to labor, and less than labor. Yes, sir. But production always increases. In BPSC interview, it is asked that under law of diminishing returns, production increases or decreases. जिसका कंसेप्शन क्लियर नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न है तो इंक्रीज कैसे होगा, Yes, sir. बोल देगा डिक्रीज,
returns will be always positive. Whether it is increasing return, whether it is constant return, whether it is decreasing return. But rate will be less. When production increases by 10%, labor increases by 10%, both are same, then that is constant returns. Constant return. Yes, sir. When labor increases by 10%, production increases by more than 10%. That is the law of increasing returns. That is a golden period. एक चांस में यूपीएससी निकाल ली, बीपीएससी निकाल ली, उसमें चेहरे पर जो खुशी होगी, 3 चांस में निकाले उससे खुशी, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? Yes, sir. पूरे बीपीएससी में हजारों लोग दिए थे और हम पटना कॉलेज के लिए नंबर 1 नॉमिनी थे, फर्स्ट नाम। कोई कहे कि जरूर चीफ मिनिस्टर का आदमी होगा, and I was an ordinary person. और पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोस्ट पर फर्स्ट नाम रिकमेंडेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बोल पटना यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पर हम थे। At that time I was working as a lecturer under Ranchi University and I was a student of Bihar University. कहीं भी मेरा अपना कोई नहीं था। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़े लेकिन वहां नौकरी नहीं किए। रांची यूनिवर्सिटी में मिल गया अपॉर्चुनिटी, वहीं चले गए। रांची में गए तो पटना यूनिवर्सिटी में निकला के यहाँ चले आए। तो इंटरव्यू का तैयारी जो है हमारे यहाँ अभी लेक्चरर के लिए इंटरव्यू का तैयारी भी चलता है। 100% कैसे नंबर उठावे, that requires conception, law of diminishing returns. अधिकांश लड़का भूल जाता है कि डिमिनिशिंग का मतलब यहाँ डिक्रीज नहीं है बल्कि इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज बाय Decreasing rate. decreasing rate. Under increasing return there is increase by increasing rate. Under constant return there is increase by constant rate. Under diminishing return there is increase by diminishing rate. Production increases but at diminishing rate. Yes. That is why it is known as diminishing returns in economics microeconomics. And this is most significant because this gives you caution, warning that sooner you will have production under minus. Company becomes alert. And if we join 3 diagrams, then this will complete 1 diagram.
पूनम, Yes, sir. अब 1973 में Yes, sir. बिहार यूनिवर्सिटी जो है Yes, sir. मुजफ्फरपुर में है, उसमें हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और उसके 7 डेज बाद Yes, sir. रांची यूनिवर्सिटी में एडवर्टीजमेंट निकला। आई अपीयर्ड देयर and I was selected number 1. And the topper of Ranchi University was not selected. And I joined Ranchi University. When I was working Ranchi University, one day in a dhaba where we were eating our meal, there was an advertisement about Patna University. One fellow of Ranchi University told me about this. We and that fellow both filled up the form. And both came Patna from Ranchi in the examination for selection. And he was senior to me in Ranchi University. He was an old person. Not too much old, but few years senior. When the result came, my name was first and his name was second. If he would join Patna University, he will be junior and I will be senior. So he did not join. And after 2 or 3 years, he was very much sorry when he was transferred to rural area of tribal area. Patna, there is no change. Every college in Patna, you cannot go outside Patna. And for that purpose, I joined immediately. And that fellow did not join. Then he came to me and said that anyhow, may I join? Well, not possible. Other person have joined. And when I appeared in Ranchi University topper was rejected. When I appeared in Patna University topper was rejected. People thought that I have too much power, political power, money power, approach power. Yes. But that is not the thing. Thing is that I was taught by Dr. B.N. Verma of Delhi University, and he was in US also. Economics, what I teach you, I learned from him and develop myself. And when I was a student, he was preparing for US. I was sitting there, I asked him that why you are reading, you are already triple gold medalist in BA, MA, LLB. Why are you reading too much? He said that I had to go abroad, USA, and for that I do all these things. I asked him that what you do. He narrated all his story, how did he is preparing for the US university. I adopted all these things for myself in Indian University and all trick and everything. Whatever question they ask, about 20, 30 questions, I replied each one. They have given me paper and pencil to draw equations. I completed equations and given it. And in interview and in academic qualification, I got 50 out of 50. And in interview, 49 out of 50. That will become the 99. People thought that very powerful person. But I always feel among their students that your talent will not go in vain. It will be recognized.
if you have really read, if you really answer, right? In BPSC also, 80% marks so many times they got and joined. So many times top the list. Yes, sir. And you feel that if your diagram is clean, correct, if you are giving equations properly, conception systematically, this is the requirement of any examination. Yes, sir. Yes, sir. And this requires at least dozen of books you should have consulted. That I make up from my side to students. Yes, sir. And then if they understood it, it is yours. Who taught you, that is not the matter. How do you express it, that is the matter. Yes, How do you draw a diagram, that is the matter. yes, Always take everything granted that if it becomes yours, your number will go high. No one will compete you, no one will defeat you except your own friend taught by me. yes, sir. Because he is also player, he is also player. Yes, sir. Yes, sir. एक लड़की थी, उसका नाम नहीं बताएंगी, हम्म, उसका रिजल्ट जो है बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, हम्म, but she could not qualify because fail in the mathematics okay. class course. She came to me and she was weeping at what people will think about. I said that you got highest marks in honors. Mm. It means you have talent, but your mathematics is poor, and you have taken mathematics as a subject and did not read it. You should have taken help from someone. I suggested that don't tell it, your result, to your parents or friend, and go Delhi, join their ALS. ALS या क्या नाम है इसका, ये आवाजी राव का, कभी ALS या क्या बोली, ज्वाइन, Mhm. और 1 year वहीं रह करके पढ़ो, और नेक्स्ट ईयर लौट करके आओ बिहार, ये क्लियर कर लो, फिर से दे दो. उसके बाद शी फॉलोड इट. उसका गार्जियन हमसे मिलने के लिए आया, यार यू सजेस्टिंग दिस, हम यस. वहां यूपीएससी, बीपीएससी, जीएसटी सब पढ़ उड़ ली. अब बैक फिर बिहार आई, क्लियर हुई ऑनर्स में, अगेन सी टॉप द लिस्ट, और मैथमेटिक्स में 33 पर पास होता है, तो उसको 33 आया. और उसके बाद वो उसी साल पे बीपीएससी दी, और बीपीएससी में काफी हाई मार्क्स से कम्पीट की. शहर में जगह जगह उसका बैनर बना के टांगे हुआ था, और हर इंस्टीट्यूट वाला जो है कहता था कि मेरी स्टूडेंट, एक्सेप्ट माई सेल्फ. हम किसी को नहीं कहे कि मेरी स्टूडेंट, जो जानता है जानता है. वीडियो ये सब जो है उसको बहुत जगह साथ में भाषण हो रहा है, कुछ हो रहा है उसमें, लेकिन आई डिड नॉट से. हमसे पूछी कि क्या करें हम सर, हम कहे कि सब जगह जो है 3-4 कलर का साड़ी पहन के, फ्रॉक पहन के अपना फोटो दे दो. दे पेड फॉर दिस एक्सेप्टेंस. सबका फॉर्म भरी, कंप्लीट करने के बाद पीछे डेट से सब कह रहा है कि मेरी स्टूडेंट, और बड़ा बड़ा बैनर फोटो लगाया. अचीवमेंट जब एक बार आपको हो जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा कि आपका क्या पहले था नहीं था. इसलिए जितना चीज बताते हैं उसको अपना बना लो. अपना बनाने के लिए है कि उसको 2 बार 3 बार जब खाली बैठी तो प्रैक्टिस करो. पुराना न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस करो, स्केच पेन से प्रैक्टिस करो. ये हाथ जो है जितना, कैसे होता है कि नए में साइकिल चलाने में गिर जाता है,
Yes. तो आदमी पकड़े रहता है तब चलाता है साइकिल। और सोचिए वही साइकिल अब आप आराम से चला रहे हैं, वही चीज होता है। तो आपका जो अलाई है वो डायग्राम बनाने में फास्ट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और इतना एग्जामिनर खुश होता है। कभी कभी एग्जामिनर जो है पटना कॉलेज में आता था तो हमसे पूछता कि सर आप पढ़ाते हैं क्या? हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। नहीं, कोई किसी को कमीशन के लिए पढ़ाते हैं, नाम नहीं पढ़ाते, पढ़ाना हमको अलाउड नहीं। Yes. अब हम रिटायर कर गए तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय में था कि पढ़ाना नहीं है। कितनों पूछेंगे ना, कहा कि लेकिन ये स्टैंडर्ड जो लग रहा है वो दिल्ली का हो गया स्टूडेंट, दिल्ली से आके यहाँ देख के चला गया। और बहुत तारीफ था, मन में खुशी भी हुई कि कोई लड़का है जो इतना अच्छा लिखा, एग्जामिनर को इम्प्रेस्ड हो गया। तो तुमको अगर एग्जामिनेशन में आ गया लॉज ऑफ रिटर्न्स, तो इतना ही बात लिखना है। ये क्लासिकल अप्रोच है। कौन अप्रोच है? Classical approach. अब इसी में दे देगा क्लासिकल एंड मॉडर्न। और मॉडर्न अप्रोच को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Okay. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है इसमें भी थ्री स्टेज होगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं होता है। वहां भी थ्री स्टेज था, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। लेकिन यहाँ क्या होगा? स्टेज वन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज टू, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्टेज थ्री, निगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, निगेटिव रिटर्न। निगेटिव रिटर्न मतलब हो गया नो एंट्री। नो एंट्री बाय प्रोड्यूसर, निगेटिव है। और अब इसमें जो एनालिसिस होगा दैट विल बी
marginal productivity, average productivity, total productivity. Total production average production marginal production एवरेज प्रोडक्शन हो गया एपी, मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया एमपी, टोटल प्रोडक्शन हो गया टीपी, अब ये तीनों का मैक्सिमम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे टीपी का मैक्सिमम, एपी का मैक्सिमम, एमपी का मैक्सिमम, एमपी का मैक्सिमम, एमपी का जीरो। नियम कहता है जहां मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम। यही इसका रूल हो गया। रूल हम लोग को क्या हो गया कि मार्जिनल प्रोडक्शन Zero TP is maximum. जीरो, then TP is maximum. TP is maximum. Yes, sir. That we require. मैक्सिमम हम लोग को चाहिए। Yes. तो प्रोडक्शन will increase, labor will increase till marginal productivity becomes zero. Zero. Yes, sir. Total productivity will be maximum. And what is the role of average production? Average production is increasing, maximum then fall. Then Yes, sir. average production is maximum. It means this is end of increasing returns and the starting of diminishing return. When average production is maximized, producer will be alert that now increasing returns ends and diminishing return will start. Under diminishing return, they will produce till marginal productivity is positive. But marginal productivity gradually going down and become zero. Then as soon as marginal productivity is zero, total productivity is maximum. Maximum. That is the attainment of the objective. We will see, look here without tension, see here. Just learn here that how will we draw. First we will draw 45-degree line. Look here. See on the board. Don't
and draw it, see in the board. And then one curve like this. It is tangent here and then going up and down. This is maximum. Maximum. This is total production and this is maximum. What I have said that total is a maximum when marginal is 0. 0. And average is maximum when increasing diminishing return divided. Divided. Look here, this tangent point is most important point. Why? Because this will tell us that this is maximum. This is average product. And then we will have in between two line, marginal production line, and draw a line here down. Then draw here. This area is diminishing return. This area is negative return. This area is increasing return. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हम नेक्स्ट क्लास और डिटेल करेंगे. ओके सर. यस सर. बनाने का ट्रिक जो बताए वैसे रफ में 1-2 बार बनाओगी. पहले 45 डिग्री का लाइन, तब टोटल प्रोडक्ट का कर्व, तब टोटल प्रोडक्ट जहां टच कर रहा है ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, जहां मैक्सिमम किए वहां से परपेंडिकुलर. उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट कर्व को खींचना है और लास्ट में खींचना है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जहां ये हाईएस्ट है, भीतर में हाईएस्ट करेंगे और वहां से टॉप को काटेंगे और सीधे लाएंगे 0 को काटेंगे. और से याद है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ठीक सामने वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम F देंगे. इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम जहां होता है उसके ठीक सामने जो पॉइंट होगा
टोटल प्रोडक्ट पर. Point of inflection showed that marginal product is maximized Yes, sir. and it is reflected by F point on total product curve. टोटल प्रोडक्ट कर्व को झटका लगेगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया और हमारा कर्व जो है कन्वेक्स से कनकेव हो जाएगा. गौर से देखो, ये हो रहा है कनकेव. Yes, sir. ये हो रहा है कन्वेक्स. और कन्वेक्स से कनकेव में बदलता है कब? टोटल प्रोडक्ट कर्व जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. You will tell that point of inflection shows that marginal product is maximized and curvature of total product will change. Curvature will be convex and now it will be concave. Curvature of total product curve changes at the point of inflection. Point of inflection is very important because it tells us that the situation of the company is not same. Point of inflection जो है वो सिग्नल देता है marginal product is maximized, total product curve will change from convex to concave, and sooner increasing return will end. Yes, sir. And factory will go under diminishing return. Okay. All this signal is through point of inflection. Clear है? Yes, sir. अब हम लोग इसको फिर से इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास. Okay. Thank you. स्क्रीनशॉट ले ली ना? Yes, sir. देखिए उसमें एफ बना लो. Yes, sir. एफ बना ली हो? Yes, sir. Increasing